Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to discuss the previous year questions from ISRO. आप सबको पता है कि इसरो का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो, डेडलाइन इज स्टिल 14th of June. Still you guys have like 4 days. जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया बेटा आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो. एज लिमिट 28 ईयर्स है, इस चीज का ध्यान रखना है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो और फॉर्म को फिल कर दो. और प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है. सो हर वीकेंड पे मैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ. तो by the time we'll end up with the previous year questions, we'll get the other details as well. तो उसके बाद हम प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे. मोर ओवर पैरेलली मैं गेट के सेशंस भी ले रही हूँ यूट्यूब पे. जो लोग स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग यूट्यूब पे लाइव सेशंस फॉलो करने शुरू करो. और कुछ अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी लाइव में नहीं चल रहा तो उसके रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, आप उनको देखो. ठीक है. वीकेंड्स पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. पहले वीक में आई डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. उसके बाद हम लोगों ने डीबीएमएस और डिजिटल की गई थे. आज वाले सेशन में मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए. मिक्स्ड एज इन लाइक कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के आएंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के आएंगे. ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि लास्ट सेशन में जब मैंने आपसे पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नेक्स्ट करने, तो डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाईज आए थे. तो इन ऑर्डर टू लाइक अकोमोडेट ऑल द रिक्वेस्ट, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ले लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके. So let's begin with the session. For each question, I'll be giving you 1.5 minute ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट छोटी सी है तो 30 सेकेंड्स भी बहुत है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं. रीजन इज इसरो में number of questions are more as compared to the time provided. तो इसलिए straight forward theoretical questions भी आते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है and you know the meaning. You have to opt for the correct option. And you know that there are no multiple select questions or numerical answer type questions. तो MCQ type questions आएंगे, आपको idea लग जाएगा. But even if अगर आप थोड़ा बहुत guess भी कर रहे हो तो it should be a smart guess. Don't ever go for the blind guesses. Okay. So let's start with the first question. Uh, you can read it out, and it's from operating systems. It's based on the disk capacity. So we are given with a magnetic disk, number of cylinders are given to you, number of tracks are given, number of sectors on each track are also given, sector size is given. We have to find out the maximum capacity of the disk in kilobytes. I guess this is one of the very simple question. So we have to find out the disk capacity. Anyone know the answer? So here, disk capacity is, we know that disk capacity, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने cylinders हैं, right? So in this case, 100 cylinders are given to us. So number of cylinders, disk capacity is nothing but it's the number of cylinders. उसके बाद हर एक cylinder के ऊपर कितने tracks हैं into number of tracks. You can see it like, let's assume that this is one cylinder. On the cylinder, there are multiple tracks. Okay. आपने डिस्क देखी होगी, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रैक्स, और उसके बाद फर्दर दिस इज डिवाइडेड इनटू द सेक्टर. सो एक सिलेंडर के ऊपर कितने ट्रैक्स है? नंबर ऑफ ट्रैक्स. नाउ ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सम नंबर ऑफ सेक्टर्स, सो इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स. And finally on the sectors we are storing the data, so we are given with the sector size. Here the sector size is given as 128 bytes. Sector size is 128 bytes into sector size. So ultimately this comes out to be, you just have to substitute the values. It is 100 cylinders are there, number of tracks are 10 into 10, number of sectors are also 10 into sector size. Sector size is 128 bytes. So ultimately this comes out to be, capital B means bytes, small b अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब हम bits की बात कर रहे हैं. So this comes out to be 128,0,0,0 bytes.
but here we are supposed to return the answer in kilobytes. अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक था. Okay, kilobytes means sometimes we take 1 KB as 2 raised to power 10, that is in the powers of 2, right? That is 1024 bytes. और कई बार हम बोलते हैं 1 kilo is 1000, 1 kilobyte is equal to 1000 bytes. तो यहाँ पे कौन सा लेना है, क्योंकि अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग द आंसर एज बी, दैट इज 1280. बट अगर हम डिवाइड बाय 1024 करते हैं तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1250. So, इसका मतलब एम्बिग्विटी आ गई. देयर इज नो एम्बिग्विटी. यू नीड टू कंसिडर जब भी क्वेश्चन में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो 2 रेज टू पावर की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यानी कि आप बिट्स कंसिडर कर रहे हो, तो वहां पे हम जो किलोबाइट की वैल्यू लेते हैं दैट इज 1024. If you observe here, we are representing the bytes, that is nothing but it is 2 raised to power 7 bytes. So definitely if I have to return the answer here, instead of dividing it by 1000, I'll be dividing this by 1024. I'll be taking this value for the kilobyte. Okay, although दोनों values correct है, but you have to decide wisely. आपको ये wisely choose करना पड़ेगा कि किलो की value 1000 लेनी है या 1024 लेनी है. In fact, जब हम memory related questions करते हैं, you are going to represent the address. तो एड्रेस हम बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. बिट की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, यानी कि वहां पे भी मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वहां पे भी हम किलो बाइट की वैल्यू लेंगे 1024 इंस्टेड ऑफ 10 raised to power 3 or 1000. Is this point clear? Very good evening प्रशांत. ये चीज क्लियर हुई? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर ऑप्ट किया था, दैट वाज ऑप्शन बी. Although both are correct, but the appropriate answer here is it's option C. How we are getting this? So if I have to convert this to kilobyte, right now the answer is in bytes. हमें kilobytes में represent करने हैं, so I'll be dividing this by 1, 2, 3, 4 divided by 1024. And now the answer will be in kilobytes. So it comes out to be 1250 kilobytes. Make sense? अदरवाइज इस क्वेश्चन में और कोई ट्रिक नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. डिस्क कैपेसिटी फाइंड करनी थी. ऑल द वैल्यूज वर गिवन टू यू, यू जस्ट हैड टू मल्टीप्लाई. इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैल्यूज वर सो इजी कि आपको कैलकुलेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी. यू नीड नॉट टू waste your time in the calculation. The only point that you had to consider here is what value you have to consider for kilobytes. Okay. A is out of the world answer. Here 1280000. This is representing the value in bytes. प्रशांत आपने शायद क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है. It is asking that what is the maximum capacity of the disk in kilobytes. और जो आप 1 to जब भी बेटा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो यूनिट्स को कंसिडर कर लिया करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है. जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज गिवन इन the terms of what, and the answer that you are supposed to return that is in terms of what. तो इसीलिए हर स्टेप पे मैंने यहाँ पे यूनिट्स मेंशन किए हैं. ये जो आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज इन बाइट्स, but we were supposed to return the answer in kilobytes. So A is undoubtedly, A और D को तो सबसे पहले बाहर निकालेंगे. D तो वैसे किसी भी सेंस में नहीं आ सकता. ये जो 128000 है ये बाइट्स की फॉर्म में. ये किलोबाइट्स और किलोबाइट्स में, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता था बी और सी में. ए तो बिल्कुल ही बाहर है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कुछ ज्यादा था नहीं इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट वन. Now this is the question from computer organization and architecture. It's based on the concept of the tagged memory. So how many total bits are required for a direct mapped cache? This is from the cache memory concept with 1 to 8 kilobytes of data and 1 word block size. Block size आपको एक given है, 1 block size, and block size 1 word size is given as 4 bytes. The total address assuming a address of 32 bits. So this is the concept from cache memory.
computer organization and architecture. Anyone having any idea? मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया कि अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, बट जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी स्टडी करते हैं दैट इज द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी और द वर्चुअल मेमोरी. बट जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर सिलेबस में मेमोरी गिवन है दैट इज रिलेटेड टू द कैशे मेमोरी. सो ऑब्वियसली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है. So do you want to give it a try? Just see what is given and what you are supposed to return. Anyone? Should I solve it? So here, first of all, we are given with a 32-bit address. So let's consider here a memory with 32 bits. This is of 32-bit address. Now, we know that when we are talking about the memory, तो अगर simple cache memory की बात करते हैं, we have the word offset. Word offset means how many words are there, and out of those words, how many bits are required to represent the particular word. किसी particular word को जब आपको select करने हैं तो कितनी bits चाहिए, that is represented by the word offset. अब यहाँ पे क्योंकि हम tag memory use करें, it's just like आपके पास this is the memory. Okay, in one block, this is one block, this is one block. So here I'm considering that there are 4 blocks, or these are the number of lines. Now in one word, we are in one block, we are storing the word of size 4 bytes. So that means how many bits are required? 4 bytes means 0001 1011. So this is representing 1 byte. इसको 1 byte में क्यों लिए? Because we know that when we are storing the data, by default the memory is byte addressable. By default, memory is byte addressable. So that's why I'm considering 1 byte. By default, memory is byte addressable. So in one block, in each block, there are 4 bytes. That means in order to represent, in order to pick a particular block, 2 bits are required. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं word offset के लिए 2 bits चाहिए. 32 minus 15 is 17. What is this 17 representing now? Okay, 2 bits word addressable के लिए आ गई. उसके बाद आपसे पूछा है कि lines कितनी होंगी. Here it is saying that 128 KB of data, direct mapped cache with 128 KB of data, यानी कि जो data store हो रहा है that is of data size is given as 128 kilobyte. यहाँ पे ऐसे कितने ब्लॉक्स बनेंगे? In one block we are storing one block size is given as 4 bytes. तो कितने blocks बनेंगे? Basically I'm going to calculate the number of lines. So block size is given as 4 bytes. So if I find out the number of lines, that will be the cache memory size. Cache memory size divided by the block size. Cache memory size here is given as, this was given as 128 kilobyte, and this is given as 2 raised to power or 4 bytes. इसको simplify कर लो, byte से byte cancel हो जाएगा. This is 2 raised to power 17 and this is 2 raised to power 2 kilo. So this comes out to be 2 raised to power 15. This is given, this is coming out to be 2 raised to power 15, right? Now,
How many lines are there? There are 2 raised to power 15 lines. So that means in order to represent the line offset को represent करने के लिए कितनी bits चाहिए होंगी? There will be 15 bits required. 15 bits are required for the line offset. Total 17 bits होगी and where the complete address is of 32 bits, तो इसका मतलब जो आपके पास tag bits आएंगी, tag bits will be of size 15. 32 minus 17, that comes out to be 15 bits. Make sense? 15 bits. Correct? यहाँ तक कोई doubt? Very good evening, Kanchan. ये clear हो गया? So we have got the addresses. Now we are supposed to find out the total number of bits required to for a direct mapped cache. तो total number of bits कितनी चाहिए होंगी? So first of all, we need to find out the tag memory size. Tag memory size will be equal to the number of lines. कितनी टैग लाइंस है और हर एक लाइन में कितनी बिट स्टोर हो रही है इनटू टैग स्पेस in line. So how many lines are there? If 15 bits are there, that means the number of lines will be 2 raised to power 15. Here we are getting the number of lines, so it's 2 raised to power 15. और हर एक लाइन में कितनी टैग बिट्स स्टोर हो रही है? 15 bits. So this is representing the tag memory size. ये सिर्फ और सिर्फ टैग मेमोरी का साइज है, बट इसके अलावा आपके पास डेटा साइज भी तो है. वी आर गिवन विद द डेटा एज वेल. सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मेमोरी साइज, total cache will be equal to the tag memory size plus the data size. Tag memory size plus data size. Now just substitute the values. So this comes out to be 2 raised to power 15 into 15 bits and plus in addition to this we are getting 128 kilobits. Now just simplify it. This comes out to be 32k plus 32k into 15 bits plus this comes out to be 128 और ये जो 128 था this was in bytes. Memory size in bytes. So I'll convert this to bits. I guess this is going behind the image. Wait a minute. Okay. तो ये जो मेमोरी थी दिस वाज गिवन इन द बाइट्स 128 किलोबाइट्स और जो फर्स्ट यूनिट आ रही है आपके पास दैट इज इन टर्म्स ऑफ बिट्स. ये बाइट्स में तो इसको भी हमने बिट्स में कन्वर्ट कर लिया 128 into 8 kilo bits. Now this is in bits. This term is also in bits, right? So we can simplify this. This comes out to be 480 kilobits and second term से आपके पास आ रहा है 1024 kilobits. Just take the sum. This comes out to be 1504 kilobits. How can we represent this? यहाँ पे आपके पास megabits की फॉर्म में गिवन है यानी कि और 0.5 ले लेंगे into मेगा में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 1000. So this comes out to be 1.5 megabits. Make sense? तो कुछ नहीं करना था आपको. टोटल डेटा साइज गिवन था, ब्लॉक साइज गिवन था, यू हैड कैलकुलेटेड द लाइन ऑफसेट, यू हैड कैलकुलेटेड द tag bits. On the basis of that we got the tag memory size and total cache memory size means it's containing the tag memory and the data size. और इस टोटल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? दैट इज 1.5 megabit. So correct answer for this question is it's option D. Is this clear? Guys, is it clear? I'm not getting the confirmation.
अगर yes या no में कुछ नहीं आ रहा तो I'll assume this as it's clear. So I'll move on to the next question. I guess it's clear to everyone. Or should I repeat it? कुछ नहीं किए. Total memory was given. Cache memory, total data is divided into the blocks, and we know that blocks are by default the byte addressable, so we got the word of offset from there. क्योंकि यहाँ पे आपको 4 bytes given है, so what I have done is I have taken the log base to 4. So that is coming out to be 2 bits. Now here total data was of 128 kilobytes, but here this is divided into the 4 byte blocks, so that's why I'm taking here log base 2 2 raised to power 15. 2 raised to power 15 कहाँ से आया है? It is here. I have taken this value here. और उसके बाद total जो tag bits है, that is nothing but 32 minus 15 minus 2, that comes out to be 15 bits. On the basis of this, we have calculated the tag memory size. Once we got the tag memory size, we can calculate the total cache size. So that's the tag memory size plus the data size, and we got the bits. All right, next question. Remote procedure calls are used for what purpose? This is the question from the operating systems. Operating system. Remote procedure calls किस लिए use होती हैं? You are given with the 4 options. What is the answer? Basically, this is used to support to communicate between the processes which may or may not be on the same system. So if it's on the different system, then we make the वैसे भी remote नाम से समझ में आ रहा है. Remote means logically you are not there, but still you can communicate with the system. That means which is not on the same system, not on same system. रिमोट टर्म से ही समझ में आ रहा है. अब चेक करो कि कौन सी ऑप्शन सही लग रही है. कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस remotely different from each other on the same system. Is it talking it's talking about the same system? This cannot be the answer. Communication between two processes on the same system. No, it cannot be the answer. Communication between two processes on separate system. Yes. जब हमें आंसर मिल गया तो ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव तो नहीं है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज इट्स ऑप्शन सी. नथिंग मच टू डू. A given grammar is called ambiguous if this is from compiler design. This is from compiler design. किसी भी grammar को हम ambiguous कब बोलते हैं? When can we call a grammar is ambiguous? कंपाइलर डिजाइन से लगा लो. ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी कवर की है. तो अगर आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कवर हो गया, देन आल्सो यू कैन रिटर्न द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. No calculation is required. If you know that when we call a grammar as ambiguous, just check for the correct definition. It's a definition based question. Hurry up. Okay. किसी भी ग्रामर को हम एम्बिगुअस तब बोलते हैं जब एक ग्रामर के लिए आपके पास दो या दो से ज्यादा डेरिवेशन ट्री बने. डेरिवेशन ट्री क्या होता है? इफ यू आर गिवन विद अ ग्रामर एंड यू हैव टू डिराइव सम स्ट्रिंग and there are multiple ways to derive the same string from the same grammar. So that means we are getting the different derivation trees. आप सिंपल टर्म्स में ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी ग्रामर के करेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए वी आर गेटिंग डिफरेंट leftmost derivation tree and the rightmost derivation tree, so we can say that that grammar is ambiguous. So two or more productions have the same non-terminal on the left side. No, this is not at all ambiguous grammar. A derivation tree has more than one associated standard. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास एक derivation tree है और different associated sentences आ रहे हैं. ये कभी भी नहीं हो सकता. There is a sentence, कोई sentence है, कोई string है जिसको generate करने के लिए एक से ज्यादा derivation tree आ रहे हैं. Yes, this is ambiguous grammar.
ब्रैकेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ग्रामर, ऐसा एम्बिगुअस ग्रामर से कोई जरूरी नहीं है कि अगर ब्रैकेट्स प्रेजेंट नहीं है तो एम्बिग्विटी आएगी ही आएगी, but definitely brackets are used in order to make the grammar more clear. Okay, so answer is C for this question. Next one. All right. So what will be the answer? This is based on the checksum field in the TCP header. What is this TCP header? Checksum field in the TCP header. It only takes the complement of the header and the data fields. TCP अपना header add करेगा, TCP अपना data add करेगा. Along with that, it must be getting the header from the upper layer, that is the pseudo header. So here, basically, this includes a pseudo header. It includes the pseudo header. It includes the TCP header. It includes the TCP data. So checksum is going to take the sum of all of these, and then it is going to take its one's complement, that is the checksum. One's complement of just the header and the data bytes? No. One's complement of sum of header, data and pseudo header? Yes. So this looks fine. Dropped from IPv6 header? Definitely IPv6 header में भी नहीं होता है, but this is the most appropriate definition for the checksum, so we'll go with option B. Better than MD5 कोई comparison ही नहीं है, so we'll not opt for option D. So yes, B is the right answer for this question. Very good, Kanchan. In previous question, have you added kilobytes? Yes, I did that. Prashant, I guess you are busy somewhere else, so you can follow the recorded session. After that question, in fact, we have discussed two more questions. Okay, so finish your work. जो भी आप कर रहे हो उसके बाद you can see everything I have discussed. जब आप टोटल डेटा लोगे तो ऑब्वियस है कि आप पूरा किलोबाइट्स में जो डेटा गिवन है दैट विल आल्सो बी एडेड. Anyways, guys, next question. The hardware implementation which provides mutual exclusion. For this question, what should be the answer? जो भी previous questions है and the students those who have joined the session late या फिर आप बीच में कोई question अगर skip कर गए हो तो उसके बाद session के बाद आपको पता है recordings available रहती हैं तो just go through the recorded session, you will get the answers for your queries. Okay, both the options. Okay, so in this case also there was a confusion between option B and C. So majority opted for option C, but if you see when we are going to implement the semaphores for mutual exclusion, we make use of the wait, uh, wait and signal processes, right? Wait or signal operations होते हैं. Now, in order to implement this, there is no requirement of the header. Semaphores में हम दो operations perform करते हैं, semaphores. So in this case, we are using two operations. One is the signal and other one is the wait. For this, it needs the kernel support. It needs kernel support. आर्मी वाले कर्नल नहीं है, जो सिस्टम में कर्नल है वो वाले कर्नल है. So kernel, in order to make these operations atomic, so in this case there is no requirement of the hardware support, right? So the most appropriate answer is test and set instruction. ये purely hardware related implementation है, so I'll go with option B. Okay, although semaphores provides the software and hardware, ये purely hardware solution नहीं है. This is the software
in order to in order to implement the semaphores, we need software and hardware implementation. It's not completely the hardware implementation. So the most appropriate answer here is it's the test and set instruction. Okay. Next one. Which of the following algorithm defines time quantum? This is the question from operating systems. Operating systems. Under which scenario we need to define the time quantum? I guess this one is the simplest one. Time quantum means the time is divided into the slices and each process will be allocated with a slice so that every process gets a fair chance to get executed. Right? So if the process requires more time to execute or to complete this execution, then for one time it has to get preempted. जैसे ही time quantum expire होता है तो process preempt हो जाता है, then again it will wait for its turn and again it will get the time quantum time slice to continue with its execution. Right? ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्रोसेस आया और वो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग. तो the processes which requires less time burst, they were into the waiting state. So in order to reduce the average waiting time, the concept of the time quantum was introduced. Right? तो टाइम क्वांटम क्या करता है, सारे प्रोसेसेस को फेयर चांस देते हैं. फॉर एग्जांपल 4 सेकंड्स के लिए भाई आप एग्जीक्यूट हो जाओ, 4 टाइम यूनिट्स के लिए सेकंड प्रोसेस 4 टाइम यूनिट्स के लिए. whatever processes will be available at that point of time, all the processes will get a fair chance. So this happens in case of what? वापस से घूम के अगर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, वापस से प्रोसेस को दोबारा चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए. तो ये किस में होता है? वापस आना मीन्स समथिंग लाइक राउंड रॉबिन, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इट्स यूज्ड इन राउंड रॉबिन. शॉर्टेज जॉब स्केड्यूलिंग में हम ऐसा कुछ यूज नहीं करते. प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में ऑल्सो टाइम क्वांटम इज नॉट कंसिडर्ड. मल्टी लेवल क्यू, different queues might be using the different CPU scheduling algorithm. So there is no hard and fast rule कि हमेशा time quantum आएगा ही आएगा. It depends if any queue is implementing the round robin scheduling algorithm. Definitely it will be using time quantum. So this time is associated with the round robin scheduling algorithm. So correct answer for this question is it's option B. Next one, dispatch latency. This is also from the operating system. What is dispatch latency? Dispatcher का क्या काम होता है? What is the functionality of the dispatcher? Dispatcher का काम speed को control करना है. Because in option A, this is saying that the speed of dispatching a process, किस speed से process dispatch हो रहा है, that is the dispatcher latency. Is that the scenario? Dispatcher means किसी एक प्रोसेस को रोककर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे. सो दैट इज डिस्पैचर. एग्जीक्यूट करवा रहे मींस इट इज टेकिंग द प्रोसेस from the ready state to the running state, because there might be multiple processes which are ready to execute but they are unable to do so because the running state is busy or the CPU is busy. Running state is representing that the CPU is doing some task. So the time of dispatching a process from running to ready state and keeping the CPU idle. तो अगर running से ready state में आ रहा है, ये कब आता है? Is this the responsibility of dispatcher? No. जब process को preempt होना है तो automatically it will come from the running state to the ready state. So B cannot be the answer. Dispatch latency is the time, कितना टाइम ले रहा है एक प्रोसेस को रोककर और दूसरे प्रोसेस को स्केड्यूल करने में, दैट इज द dispatch latency. So it's the time to stop one process and start running another one. So that is option C. Next question.
and aid to determine the deadlock occurrences. I guess this is one is the easiest one. Deadlock occurrence, the aid to determine the deadlock occurrences. Under what scenario this is going to happen? A, very good. So resource allocation graph. Can somebody explain that? What is this resource allocation graph? Yes, resource allocation graph, RAG is the right answer. Basically, resource allocation graph क्या represent करते हैं? Obviously, it's a graph, so we will be having a vertices and the edges. Vertices are representing the resources. Okay, so this is, let's say, resource 1, and I'm assuming that there are two types of resources available, R2, and this here we have the processes P1 and P2. Let us assume that there is one resource. अगर आपके पास एक एक इंस्टेंस ही है किसी रिसोर्स का तो आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. By default it is representing the one instance of a resource. So I'm assuming that resource 1 और resource 2 के हमारे पास एक एक इंस्टेंस ही है. So this is going to let's assume that P1 is requesting for R1, but R1 is allocated to ये वाली जो edge है, this is known as the allocation edge. Allocation edge. This edge is representing that the resource R1 is allocated to process P2, whereas P1 is requesting for R1. So this is the requesting edge. P1 is requesting for R1, but R1 resource R1 is allocated to process P2. P2 is requesting for R2, but resource R2 is allocated to process P1. This is the allocation edge. जब रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज जा रही है तो इसका मतलब कौन सा रिसोर्स कौन से प्रोसेस को मिला हुआ है. दिस इज नोन एज द एलोकेशन एज. So in the resource allocation graph, we have two types of edges and two types of vertices. Vertices means process represent करे और resources represent करे. Allocation edge and the request edge. Request edge means process बता रहा है कि कौन सा resource चाहिए. So this is the direction of this edge is from the process towards the resource. So this is how we represent the resource allocation graph. तो यहाँ पे जब cycle बन रहा है तो we can see that here this is the scenario where a deadlock is occurring. Because here we have only one instance of each resource type, R1 and R2, and R1 is allocated to P2 and P2 is requesting for R2. R2 is allocated to P1 and P1 is waiting for R1. So this is the scenario where deadlock is occurring. अगर इन दोनों में से किसी भी एक भी रिसोर्स के इंस्टेंसेस एक से ज्यादा होंगे, obviously it will come out of the deadlock state. Okay, so anyhow, let's not go into the details of the deadlock. So basically I just wanted you to understand that what is this resource allocation graph. Make sense? Okay, next one. Consider the following page reference string. What are the minimum number of frames required to get a single page fault for the above sequence assuming LRU replacement strategy? Okay, although this question is the ambiguous question, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, in order to get a single page fault, in order to get a single page fault कितने page frames होने चाहिए, ये हम find कर सकते हैं if it is mentioned here that already the number of frames are having few resources. Initially it's not empty, but जब हम page fault की बात करते हैं, we consider that the page frames are empty. Initially it is empty. तो जो भी इनिशियल फ्रेम्स आप ऐड करोगे पेज फॉल्ट तो उनके लिए भी आएगा. तो यहाँ पे जितने भी पेजेस है कम से कम एक एक बार तो फ्रेम में जाएंगे. At least they'll be going into the page frame for first time. One, if it's the initially it's empty, तो one के लिए भी page fault आएगा, two के लिए भी, three के लिए भी, four के लिए भी, सबके लिए एक एक बार तो page fault आएगा ही. So minimum 7 page faults will surely occur, right?
7 मैम, राउंड रॉबिन विल गो। आई गेस प्रशांत आपकी वीडियो या तो पीछे चल रही है, because you are returning the answers for the questions which we have covered like 10 minutes back. तो सिंगल पेज फॉल्ट इज नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब इनिशियली आपके पास कुछ पेजेस ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड है. सो बिकॉज ऑफ दिस वाज अ एम्बिगुअस क्वेश्चन, बट एनी हाउ लेट्स अज्यूम दैट इनिशियली if 5 page frames are there तो 5 pages already memory में available है. So we are going to proceed it like this. Okay, so if we are going to take with 4 or 5 page frames, obviously it is going to take more number of page faults. Let's try it with, let us assume that number of frames are 5. If 5 frames are there, number of frames are 5. If 5 frames are there, it will be initially loaded with some data. 1, 2, 3, 4 and 5. If initially some data is there, so I'm assuming that 1 was there, 2 is there, 3 is there, 4 is there, उसके बाद जो next आ रहा है that is 5. Initially some data is present. अगर initially ये empty है तो इस question का आंसर हम नहीं दे सकते, because in that case there is no possibility that we get a single page fault. Okay, so I'm assuming that this is the initial data given to you. This is already there in the memory. Okay, after this we are going to start from here, क्योंकि यहाँ तक तो already आपके पास available है data. So I'm going to start from 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3 and 6. You get it? So here we'll be finding out the page faults. Now all the page frames are empty. If any new request is coming up, then definitely in that case the page fault will take place. And if we have to replace one of the existing page, क्योंकि यहाँ पे सारे frames full है, तो जब भी हमें existing page को replace करना होता है, that time we need to consider the replacement algorithm. तो यहाँ पे जो question है, that is based on the LRU, least recently used. That means the page frame that is not used for long. Option C. Okay. ये ऑप्शन सी, आई होप कि आपने एज्यूम किया है by considering that already first 6 page faults are not considered, right? तो 5 के साथ more number of, अगर 5 के साथ ज्यादा page faults आ रहे हैं तो obviously 4 के साथ और ज्यादा आएंगे. So I'll be solving this with 5 and 6. So 6 के लिए page fault is coming up. So I need to consider, this is a page fault. I need to consider the page replacement algorithm. Which page will be replaced? तो check करो कि last कौन सा आया था. 6 will be replacing which page? ठीक है, answer 6 is the right answer. So which page will be replaced when 6 has to enter? Come on. We are talking about the least recently used replacement algorithm. Least recently 5 was used, so 5 will be coming as it is. 1 was used, 2 was used, and then 4 was used. That means 3 will be replaced. So here we'll be getting 6. 2 is available, so there will be no page fault. 6, 4, 5. 1 is available, there will be no page fault. 6, 4, 5. 2 is available, there will be no page fault. 6, 4, 5. For 3, page fault is coming up. So which page will be replaced? 2 is used recently, 1 is used before that, and then we were having 6, and just check here, 6 and 5. So here 4 will be replaced by 3. Next 7 is coming up. So I need to replace some page with the 7. So if we look at the data, so 3,
2 and 1 are recently used, and before that we had used 6, so 5 will be replaced. So here we'll be getting 7. For 6 there will be no page fault. 1 2 6 3 7 3 is यहाँ पे अब जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं ये सारी की सारी अवेलेबल है और किसी के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं आ रहा, राइट? So if you are going to use 5 page frames, then 3 page faults are occurring, but they are asking for single page fault. So 5 cannot be the answer, 4 cannot be the answer. अब 7 के साथ भी एक भी नहीं आएगा, 7 के साथ एक भी नहीं आएगा, because 7 frames are there and different pages are 7. तो अगर सारे pages आपके पास memory में available है, so with 7 page frames there will be 0 page fault. If initially loaded with all the 7 pages, then there will be 0 page fault. Make sense? तो इसलिए हमने बोला कि ये क्वेश्चन एम्बिगुअस था, बिकॉज हियर वी नीड टू कंसिडर लॉट मेनी थिंग्स. सो this was an ambiguous question. 1 2 6 3 7. So with 5 we are getting 3 page faults. With 6 we need to calculate. With 4 it will be more than 5 page faults. With 7 we are getting 0 page faults. So correct answer is C. I hope I need not to draw it again and I need not to show it with 6 page frames. और अगर करना है तो फटाफट से इसको कर लेते हैं. Okay, so initially some data is there. Frame 1. I hope that you all are comfortable with the page replacement algorithm. हमारे पास least recently used होता है. First in first out is there. OPR there. Optimal page replacement algorithm. Most recently used algorithm. So these are various page replacement algorithms which we used to we used to replace the pages. So now I'm taking the 6 frame. So 1 2 3 4 5 6, that means यहाँ तक आ रहा है आपके पास 4 5 6. Till this point there is no page fault. After that we have to store 2 1 2 3 7 6 3 2 1 2 3 and 6. So when I will be storing the data. So guys, are you all comfortable with the page replacement algorithms? With all the page replacement algorithms? In operating systems, there are a lot many algorithms, page replacement algorithms. We talked about the CPU scheduling algorithms, disk scheduling algorithms, and so on. So for 2, there will be no page fault because it's there. 1 2 3 4 5 6. For 1 also 1 2 3 इनके लिए कोई page fault नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 6. पहला page fault किसके लिए आएगा? 7 के लिए. 7 will be replacing which page? Quickly write that in the chat section. 7 किसको replace करेगा according to least recently replacement strategy? Right now we have discussed how to find out the page to be replaced. 3 is most recently used, so this cannot be replaced. 2 was used before that. 1 was used before that. This way, just search for the page to be replaced by moving in the backward direction. So 3 2 1 6 5 6 and 5 are coming up. तो सिर्फ आपके पास एक ही पेज बचा, that is 4. So 4 will be replaced by 7. After that, if you see 6 3 1 2, जो भी request आ रही है वो already यहाँ पे available है, so there will be no page fault. Make sense? 3 2 7 5 6. So same data will be copied here till the end. कई बार आपसे question में क्या पूछते हैं? What all frames will be available in the memory? तो पेज फ्रेम्स आपको गिवन होंगे, कौन से फ्रेम्स मेमोरी में अवेलेबल हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट. इज दिस क्लियर? आई गेस कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि दिस क्वेश्चन वाज एम्बिगुअस क्वेश्चन. ओके, बट डोंट वरी, गेट में एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिनमें थोड़ी बहुत भी एम्बिग्विटी हो. नेक्स्ट वन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. This is also from the operating system and it's from a scheduling algorithm. This is from operating system
And the question from which this is asked, it's asked from the topic CPU scheduling algorithms. So what will be the answer? Read the question. You are given that three CPU bound tasks, that means CPU specific tasks are given to you with the execution time 15, 12 and 5. I'm taking P1, P2 and P3, and their is given as burst time is given as 15, 12 and 5. And the arrival time is also given. Arrival time is 0, T and 8 respectively. If the operating system implements the shortest remaining time first, so you have to use shortest remaining time first algorithm. What should be the value of T? आपको T की value बतानी है in order to have 4 context switching. कंटेक्स्ट स्विच होता है जब एक प्रोसेस को बीच में छोड़कर प्रोसेस द कंट्रोलर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द अदर प्रोसेस, दैट इज कंटेक्स्ट स्विच. तो गैंट चार्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. वी कंस्ट्रक्ट द गैंट चार्ट in simple terms. When you are executing one process, क्योंकि arrival time is 0, so 0 पे only one process is available. एल्गोरिथम हम तब चूज करते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है. अब at time 0 no other process is available, right? So in that case definitely here will be executing process P1, क्योंकि कोई choice available ही नहीं है, तो P1 has to execute. After that it is saying that we need 4 context switches, यानी कि P1 से जब ये किसी और प्रोसेस पे जाएगा, that is known as a context switch. This is context switch. When it is going from one process to other, तो context switch time होता है, but this is so less that you cannot observe. Context switching के time पे it stores the updated content of the P1. Basically process control block होता है which contains all the information related to a process, to every process. तो प्रोसेस P1 के PCB का डेटा स्टोर करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस का PCB लोड करेगा. So that is store and load. So here we want 4 context switches to happen. So if we need 4 context switches, then what should be the value of T? This is what is asked in the question. I hope that the problem statement is clear to everyone. So we want 4 context switches. So what value of T will be giving you 4 context switches? Algorithm is shortest remaining time first. Now if you go with the option B, B is saying that this value is 0. अगर 0 value होगी, then what will happen? Shortest remaining time first है, यानी कि जिसका burst time सबसे कम है, that will be executed first. अगर हम T की value 0 लेते हैं, that means at time 0 P1 and P2 both are available. If both are available, then obviously burst time for P2 is less, so P2 will be scheduled here. एक यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ 11, 10 एंड ये कम होता जाएगा, तो ऑब्वियसली P1 के साथ ये स्विच नहीं हो सकता P2. इट विल एग्जीक्यूट टिल 8, क्योंकि 8 पे एक नया प्रोसेस आ रहा है. नाउ विल कंपेयर द बर्स्ट टाइम्स. 8 तक this has already executed for 8 units, so this remains to be 4. तो ऑब्वियसली बात है हम P2 के साथ ही कंटिन्यू करेंगे एंड इट विल गो टिल दिस वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज द कंटेक्स्ट स्विच, क्योंकि यहाँ पे P2 को ही कंटिन्यू करें. दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट टिल 12. After that P3 will be scheduled because its burst time is less by unit 12. P1 and P3 both are available. Will be opting for P3 because its burst time is less than P1. After that we'll be getting P1. So in this case, if you are going to take T value equal to 0, in this case we are getting 2 context switches. 2 context switches are taking place, but we want 4 context switches, so this cannot be the value. Correct?
Okay, let's take with this. अगर ये गलत हो जाता है तो obviously D will also be eliminated. If I'm going to take T is equal to 3, if I'm going to take this value as 3, how many context switches will take place? For T is equal to 3, यानी कि प्रोसेस 2 आपके पास थर्ड यूनिट पे आए. Okay, wait a minute. ये टाइम 3 पे आए P2, तो बाय P1 burst time is 15, P2 burst time is 12, P3 burst time is 5. जीरो पे सिर्फ आपके पास एक ही प्रोसेस अवेलेबल है P1, so we'll be scheduling P1 at time 3. We are saying that it can be equal to 3. If I'm taking 3, 3 पे आपके पास एक और प्रोसेस आ जाएगा P1 and P2. Now which process to choose? 3 यूनिट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यानी कि रिमेनिंग टाइम रिक्वायर्ड इज 12. Now P1 and P2 requires the same time. अब दोनों को सेम टाइम चाहिए. How to break the tie? If there are two processes which are ready to execute and their requirement is also same, burst time required is same, then which process will be selected? It depends on the arrival time, right? We consider the arrival time of the processes. P1 और P2 में से पहले कौन आया था? Obviously P1 आया था, so context switch won't take place here. अब दोनों का टाइम सेम है, तो till 8 it will be executing like this. So now this comes out to be 7. Now, by this time, we have process P1, P2, and P3. We have to find out the shortest, we have to schedule the process with the less burst time. P1 ka burst time is 7, P2 requires 12, P3 requires 5. So, P3 will be scheduled here. This will execute till 13, and after that, P1 will be scheduled, then P2. Make sense? 20, and this will be going till 32. अब यहाँ पे क्या होगा? If you count the number of context switches, first context switch is taking place here. P1 से P3 पे गया, P3 से P1 पे गया, P1 से P2 पे गया. In this case, we are getting 3 context switches. 3 context switches, but we want context switches. But in the question, we are clearly given that we want 4 context switches. That means T cannot be equal to 3. Make sense? अगर greater than 3 हो जाएगा, obviously that won't give you the correct value. So this means that this is the correct option. 3 के साथ 3 context switches are coming up. हमें context switch बढ़ाना है, तो इसका मतलब it's working in the reverse order. अगर number of context switches बढ़ाने हैं, तो obviously बात है कि हम जो टाइम है, टाइम क्वांटम है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, बट यहाँ पे टाइम क्वांटम की बात नहीं हो रही है. सो लेट अस ट्राई दिस विद the value 2. If this is 2, let us try here. At time 2, process P2 is coming up. Now by this time, P1 has executed for 2 units of time, so remaining time required is 13. अब P1 को 13 टाइम चाहिए, P2 को 12 टाइम चाहिए, तो obviously shorter वाले को schedule करेंगे. P2 will be scheduled here. It will execute till 8, क्योंकि 8 पे नया process आ रहा है. That is P3. Now at this time, P1, P2, P3 all are available. P1 requires 13 units of CPU time. P2 has executed for 6 units. So 12 minus 6, this comes out to be 6. So it requires 6 units and P3 requires 5 units. So this means that P3 will be scheduled here. इसके बाद कोई नया process नहीं आ रहा है, तो जो process already shorter है वो और छोटा होता जाएगा. So this comes out to be 13. 13 पे आपके पास P1 और P2 available है. This requires 13 units of time. This requires 6 units of time. So P2 will be scheduled next and it will be executing till 19. And after that, P1 will be scheduled and it will be executing till 32. So how many context switches are taking place? 4 context switches are taking place. 1, 2, 3, and 4. This means that if the value of T is greater than 0, strictly greater than 0 na chahiye, because with the value 0, we have seen that it is returning with the value to 0, it is returning 0 context switch. With the value 3, it is returning 3 context switch.
राइट, दिस इज रिटर्निंग 3 कंटेक्स्ट स्विच। तो इसका मतलब हमें वैल्यू कुछ चाहिए जो 3 से कम हो, हमें कंटेक्स्ट स्विचेस 2 से ज्यादा चाहिए। सो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 and less than 3. So it works perfectly fine when t is equal to, when t is equal to 2, arrival time of process 2 is 2, that time it is returning context switches are 4. So correct answer for this question is A. I hope that this is clear to everyone. Last question from today's session. What is compaction refers to? This is also from the operating system. No calculation is required. Operating system, no calculation is required. Compaction क्या होता है basically? When we have small chunks of memory available at the different places, but in that case we are unable to allocate it to any process. Basically what I'm saying is, when a small chunk of memory is available that is not allocated to any process, let's assume that P1 is occupying this memory, then here we have the empty slot, we have process 2 executing here, we have the empty slot available, and then we have the process 3. Now there is process 4 coming up with the request of 50 bytes of memory. Now let us assume that here we have 20 bytes of memory. This is free because this is not allocated to any process, and here this memory is also free and this is of 30 bytes. This is not allocated to any process. A process P4 आ रहा है, उसको 50 bytes of memory चाहिए, that means sufficient memory is available. But still we cannot allocate it because this is not present at one location. Basically जब हम memory management की बात करते हैं, we have, is this the internal fragmentation? Thanks for pointing out internal fragmentation. Is this the internal fragmentation? बच्चे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है जब आपके पास कोई ब्लॉक है दैट इज एलोकेटेड टू सम प्रोसेस, बट वो प्रोसेस मेमोरी को यूज नहीं कर रहा. इट्स जस्ट लाइक देयर इज वन कंटेनर, और अब मान लो आपके पास एक टम्बलर है जिसमें यू कैन स्टोर 1 liter of शेक और कोल्ड ड्रिंक और एनीथिंग लाइक दैट, बट आपने उसमें 500 ml कॉफी डाली हुई है, तो जो बाकी की 500 ml की कैपेसिटी है दैट इज गेटिंग वेस्टेड. इट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी अदर थिंग, राइट? तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जब मेमोरी किसी एक प्रोसेस को एलोकेटेड है बट उस प्रोसेस को मेमोरी उतनी चाहिए नहीं थी, सो इट इज नॉट यूजिंग दैट मेमोरी. That is internal fragmentation. So internal fragmentation comes when we have fixed length blocks. Basically, if I talk about the categories of the memory management, तो हमारे पास memory management में different techniques are there. In the memory management, we are going to allocate the memory. Contiguous memory allocation, there are two processes, two categories. Contiguous memory allocation means किसी भी process को जो memory चाहिए, it should be contiguous. ऐसा नहीं है कि कुछ part process का एक जगह पड़ा हुआ है, कुछ part दूसरी जगह पड़ा हुआ है. That is contiguous memory allocation. And other one is the non-contiguous memory allocation. Non-contiguous memory allocation. In the contiguous memory allocation, further we have two categories. One is the fixed partition scheme. That means the size of the block is fixed. Fixed partition scheme, I'm so sorry. Fixed partition scheme means the number of blocks are fixed. Okay. And variable partition scheme means as per the requirement of the process, it will take the memory. Partition scheme. Initially आपके पास एक बड़ा सा memory का chunk होता है. Fixed partition scheme में number of partitions are fixed. Let us assume that one partition is of size 50 KB, other partition is of size 100 KB. अब
इसमें ड्रॉबैक क्या आता है? पहली चीज यहाँ पे आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो. व्हाट डू आई मीन बाय डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? अगर आपके पास दो ही ब्लॉक्स है तो इसका मतलब दो ही प्रोसेसेस मेन मेमोरी में हो सकते हैं, राइट? Now let us assume that process P1 wants to want the memory of size 40. P1 की जो requirement है वो 40 किलोबाइट है. तो यहाँ पे allocation schemes आती हैं. Two blocks are available. It will be opting for which block? Best, worst fit, best fit, worst fit, and first available fit. So it is best suitable for 40 kb. So P1 will be allocated here. P1 को 40 kb use करना था. What about this remaining 10 kb? This is allocated to process P1, but it is not used by process P1. We cannot increase the number of blocks here. यहाँ पे अलग से free memory का block नहीं बनेगा, because we are talking about the fixed partition scheme. ठीक है? तो this memory that is getting wasted, ये जो memory waste हो रही है, इसको हम बोलते हैं internal fragmentation. block के अंदर fragmentation हो रही है, that is internal fragmentation. In order to overcome the problem of internal fragmentation, the solution was कि भाई number of blocks को fix मत करो. So that's why in order to overcome internal fragmentation, problem generated by fixed partition scheme is internal fragmentation. In order to overcome this problem, we have another scheme, that is variable partition scheme. That means the partitions will not be fixed. Initially आपके पास पूरा एक ब्लॉक चंक था, फिर P1 आया, P2 आया, बीच में से किसी प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर दी, it will release the memory. So ultimately the number of blocks, अब एक ब्लॉक धीरे धीरे डिवाइड होता होता छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ गया. अब छोटे छोटे ये जो पार्ट्स है, ये कुछ फ्री स्लॉट कहीं पे अवेलेबल है, कुछ फ्री स्लॉट कहीं पे अवेलेबल है. Since this memory is not under the control of P1 or P2, ये P1 या P2 के कंट्रोल में नहीं है, but still this memory is getting wasted. This is known as external fragmentation. So in case of variable partition scheme, there comes the problem of external fragmentation. तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के दो तरीके थे. एक तो ये था कि कोई भी प्रोसेस है उसको पेजेस में डिवाइड कर दो और जहां पे मेमोरी मिले वहां पे एलोकेट कर दो. दैट इज non-contiguous memory allocation. So one solution for external fragmentation is non-contiguous memory allocation, where we have the concept of paging, inverted paging, multi-level paging, multi-level paging. Have you heard about these terms? Multi-level paging, segmentation, segmented paging, inverted paging. Guys, have you heard about these? Segmentation, inverted paging, and so on. So this is coming under the non-contiguous memory allocation. Other solution is कि जो ये blocks available हैं, go for the concept of compaction. Compaction बोलता है कि जो free blocks हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दो और जो busy slots है उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दो. Compaction is saying that जो भी फ्री ब्लॉक्स हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर दो. 20 bytes, 30 bytes was the free memory. So by combining them, these free blocks will get a bigger memory block, and that can be used by some other process, right? And जो working busy memory है, that will be collected on the other side. This is compaction. But the problem with the compaction is जब आपने इनको हिलाया तो obviously यहाँ पे कुछ starting memory block होगा, ending memory block होगा. So it will disturb the already running processes. So that's why compaction was not a good idea. So in order to overcome this, the problem of disturbing the already executing processes, we went for the concept of non-contiguous memory allocation. So finally, these problems were removed by non-contiguous memory allocation. So compaction is कि हम जो फ्री मेमोरी चंक्स हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? नाउ कंप्लीट स्ट्रक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन ऑप्ट फॉर द करेक्ट आंसर. व्हाट शुड बी द आंसर नाउ?
It is a technique for overcoming internal fragmentation. क्या internal fragmentation को overcome करने के लिए compaction use करें? Internal fragmentation को overcome करने के लिए जो technique use करें, that is variable partition scheme. So this is not the answer. Is it a paging technique? Compaction, is it related to paging technique? Paging technique आई थी compaction के भी drawbacks को remove करने के लिए. So B cannot be the answer. Is it a technique for overcoming external fragmentation? Definitely variable partition scheme में आपके पास external fragmentation आई थी जिसको resolve करने का तरीका था हमारे पास compaction. So yes, this is a technique for overcoming the external fragmentation. A technique for compressing the data. Data compression की तो हमने कहीं पे बात ही नहीं की है. So D is undoubtedly incorrect answer. So C is the correct answer for this question. And I hope that you got the idea over memory management, what all techniques are there under the memory management, kiske kya drawbacks hai. I've not given you any idea about the paging, multi-level paging, segmentation, segmented paging. So definitely agar ek technique hai usme kuch na kuch problem hogi, kuch na kuch drawback hogi, that's why we are going for the other technique. Make sense, guys? So we are running out of time, so we'll end our discussion here. I hope कि आज वाला session useful था. जिन लोगों को कोई idea नहीं था, they must have learned something through the questions. So that is known as learning the concepts through questions. और जिन लोगों को knowledge थी, I guess they had given the answers. कुछ सही थे, कुछ गलत हुए, but आप लोगों को proper reasoning मिलके I hope कि आप questions को rectify कर पाए होंगे, right? We'll discuss this question tomorrow. Okay, एक ही question रह गया. Let's discuss this as well. This is from the compiler design. This is from compiler design. Very straightforward question. It will hardly take 1 minute. A grammar is defined as you are given with a grammar and it is saying that the non-terminal alphabet of the grammar is. Now, what are these terminal alphabets? ये terminal alphabets और non-terminal alphabets क्या होते हैं? Terminal alphabet, A for Assam. Okay. Terminal alphabet and non-terminal alphabet. Definitely, Nishu, you got it right. A is the answer for this question. But can you elaborate it more? What are terminal alphabets and the non-terminal alphabets? Terminal alphabets are which cannot be expanded further. So usually हम जो terminal alphabets हैं, those are represented by the small letters, represented by lowercase letters or lowercase alphabets, and this is terminal means which cannot be expanded, cannot be expanded. And non-terminal alphabets are which can be elaborated, मतलब जिनको आप आगे derive कर सकते हो, right? So these are represented by can be elaborated or can be expanded. तो आपको कैसे expand करना है, that will be given in the grammar. So these non-terminal alphabets are represented by uppercase alphabets. If you see here in the given grammar, we are getting the non-terminal alphabets. Those are A, B, C, D, and E. These are the non-terminal alphabets. And if I talk about the terminal alphabets, we have the alphabet X, then now we have the alphabet Y and Z. So these are the terminal alphabets. Very simple question. So yes, A is the right answer. B इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको A नहीं दिया है. This is a combination. This is representing the terminal alphabets. Anyone having any doubt? Ma'am, please explain once you why added 120K bytes of memory in Goa. Yeah, sure. Terminal alphabets.
जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रशांत, वेयर वर यू एट दैट टाइम? Okay, where is it? Okay. Yes. So D was the correct answer if they had asked for terminal alphabet. How many? यहाँ पे कहाँ पे problem है? Why am I adding this 128 bytes of memory? This is the data size. जब आप total cache memory का size calculate करोगे, in the cache memory, what are you storing? जो additional information है, for the tag in the form of the tag bits or in the form of the tag memory. बिकॉज आप टैग मेमोरी मेंटेन कर रहे हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट कि कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करना है. सो कैशे साइज इज नथिंग बट, ओके, कैशे साइज इज नथिंग बट द टैग मेमोरी साइज जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है. In addition to this, cache memory में we are storing the data as well. So data size, this is given in the question. वो करना जरूरी है क्या? क्या कैशे मेमोरी में आप सिर्फ और सिर्फ टैग की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो? मतलब अगर आप इंडेक्स बना रहे हो, इट्स जस्ट लाइक यू आर राइटिंग अ बुक, इंडेक्स है उसमें बट देयर इज नो कंटेंट, तो इंडेक्स किसका बना रहे हो? लेट मी कंसिडर वन एग्जांपल जिसमें आप बुक बना रहे हो एक, ओके, और यू आर प्रिपेयरिंग सम डॉक्यूमेंट और सॉफ्ट कॉपी है किसी बुक की, उसमें आपने इंडेक्स पेजेस लिए हैं, इंडेक्स पेजेस को स्टोर करवा रहे हो बट जो मेन कंटेंट है दैट इज नॉट देयर. विल इट मेक एनी सेंस? Prashant, I'm referring to your query. Will it make any sense? I just hate this thing कि पहली चीज जब सेशन चल रहा होता है, यू पीपल आर ज्वाइनिंग द सेशन लेट, उसके बाद सेशन के फ्लो को डिस्टर्ब करते हो, उसके फिर बीच में आ गए, बीच में चले गए, बीच में आ गए, बीच में चले गए, एंड देन वी वांट एवरीथिंग टू बी क्लियर. डाउट पूछ लिया, चलो फैकल्टी ने एंड पे आके आपका डाउट भी ले लिया, उसके बाद क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको रिप्लाई नहीं देना है. So from next time onwards, if any particular student is going to repeat this thing again and again, ठीक है, तो I'll not be handling the queries of that particular student. Okay, so guys, at least ये basic etiquette से अगर आप कुछ question पूछ रहे हो, आपको उसका आंसर मिल रहा है, तो confirmation देना किसकी responsibility है? So please take care of this thing. If that will happen again, I'm not going to consider your doubts. I'll simply ignore your comments. Okay, this is all I can do. So guys, this is all from my side. Tomorrow we will be having again a session on PYQs from ISRO. तो अभी तक 2020 के खत्म नहीं हुए हैं. I just want to ask कि जो हम पहले कर रहे थे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, that was a better approach, और टुडे वैसे तो काफी क्वेश्चंस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के आ गए, तो इस तरीके से रेंडमली क्वेश्चंस लेना बेटर है. Which approach is better? प्रशांत बहुत जल्दी रिप्लाई दिए, दैट्स रियली अप्रिशिएबल. ओके, so which approach is better? Because I'm comfortable with both, so it's up to you, topic wise. All right, but अभी कुछ topics के आज ले लिए, so let's see. Randomly is good. All right, I'll decide on my own. Any queries, guys? Let me discuss the schedule. As you all know that Monday to Friday I'm taking 2 sessions जो गेट और इसरो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है. 4 PM पे आई एम टेकिंग द सेशन ऑन यूट्यूब 4 to 5 PM. This is a YouTube session in which we are covering the concepts. If you are not comfortable with the concepts of the technical subjects of computer science, you can join this session. This is on YouTube, so it's free of cost. And after that, whatever concepts we are covering, on the basis of that, we are covering the previous year questions. In the previous year questions are covered in the masterclass, Testbook masterclass. This Testbook masterclass is also free.
मास्टर क्लास इज ऑल्सो फ्री। और ये जो मैं PYQs करवा रही हूँ, दिस इज फॉर द गेट। अब ये जो गेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये इसरो वाले भी पूछते हैं, तो इसका मतलब ये जो PYQs हैं, दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ GATE aspirants as well as the ISRO aspirants. Okay, Saturday and Sunday, I'm taking the session for especially on PYQs from ISRO. इसरो के पेपर्स में जो PYQs पूछे गए हैं वो कर रहे हैं। अब जब इसरो के करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी गेट में पूछे गए होंगे, तो दैट मींस दिस सेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर गेट एज वेल एज इसरो एस्पिरेंट्स। ओके, तो ये जो दोनों PYQ सेशन है, बेसिकली दीज बोथ सेशंस आर फॉर इसरो एज वेल एज गेट एस्पिरेंट्स। तो इन शॉर्ट आपके लिए जो प्रैक्टिस सेशन है वो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे डेली सेशन हो रहा है। सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज सेशंस, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया है, दिस इज फॉर एवरीवन, एनीवन कैन जॉइन दीज सेशंस, देयर इज नो फी फॉर द सेम। ओके, बट या जो हम इस क्लास में PYQs कर रहे हैं, दीज आर टॉपिक वाइज, और वो टॉपिक कहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये उनके लिए है जिनको अपनी प्रिपरेशन स्क्रैच से करनी है। So what we are doing is we are learning the concept in the session, उसी सेम वीक में हम लोग उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब जैसे कल हम लोगों ने किए थे क्वेश्चंस फ्रॉम रिकंसिलिएशन, तो यूट्यूब पे मैंने लास्ट वीकेंड आई कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिकर्सिव ट्री मेथड, मास्टर्स थ्योरम एंड एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम। तो कल आप में से कुछ लोग थे जो एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ, हो सकता है आपने एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम ना पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो कम से कम यार यूट्यूब सेशंस देख लो। Okay, and apart from this, this is optional to have the marathon session on. In addition to the PYQs from ISRO, we have the optional marathon sessions on GATE. But right now I'm not focusing on the marathon sessions for GATE, क्योंकि GATE के लिए Monday to Friday हमारे sessions चल रहे हैं और GATE आने में अभी काफी time है, so let's not go for the marathon sessions, अभी इतनी जल्दी नहीं है हमें syllabus cover करने की। Okay, so this is the structure that you can follow, this is fixed. Monday to Friday topic wise and Saturday Sunday randomly, that's good. On weekday follow the particular subject, yeah, on weekdays we are following the particular subject, in fact particular topic. अगर सब्जेक्ट मान लो एल्गोरिथम्स चल रहा है, तो ऐसा नहीं है पूरे एल्गोरिथम्स में से कहीं से भी क्वेश्चंस होंगे, इट विल बी फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक, जो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक से करेंगे। Questions Monday to Friday topic wise, yeah it's topic wise, and NIC एग्जाम के लिए भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया हुआ है बच्चे कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो दिस प्रिपरेशन विल बी हेल्पफुल in cracking lot many exams. This will help you in your semester preparation. Semester exams को तो खैर हम कुछ गिनते नहीं है ना, semester preparation में help करेगा, गेट तो है ही है, इसरो में हेल्प करेगा। दिस concepts will be used in NIC, this will be used in like UGC नेट। जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स टेक्निकल पेपर हैं कंप्यूटर साइंस के, जिनमें टेक्निकल सिलेबस आ रहा है, तो वहां पे आपके ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, टेक्निकल पेपर्स। सो ये कहने की बात है कि ये जो मैं सेशंस ले रही हूँ ये गेट वालों के लिए ही बेनिफिशियल है, नो दैट्स नॉट द केस। द ओनली थिंग इज बस ये है कि गेट इज लाइक सुपर सेट, सो इट्स हैविंग अ गुड लेवल। तो अगर आपने हाई लेवल की प्रिपरेशन की हुई है, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी जैसे हमने देखा कंपैक्शन क्या होती है, डिस्पैचर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में नहीं आते, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। गेट में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं, बट या इन यूजीसी नेट, एनआईसी, इसरो, यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन आता है इजी, एवरेज और लाइक द हाई लेवल क्वेश्चंस। तो सिर्फ और सिर्फ लेवल का फर्क पड़ता है, डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंस इज इन द लेवल, दैट्स इट। Okay, I hope now this is clear to everyone.
तो NIC के लिए I took few sessions. Let me share my screen. I hope that will be visible to you. Uh, just give me a minute. I hope my screen is visible to you guys. So if I go to this video, so you go to the description. Okay, I had to announce one more thing. So those who want to follow these sessions regularly, आपको PDF चाहिए तो guys join the Telegram group क्योंकि Telegram group में मैं सारे sessions से related PDF भी share करती हूँ and I share the link of all the sessions. Here, we have a series for NIC. So NIC के कुछ sessions हैं and if you want to join the NIC Super Coaching, you can use this second link and for NIC master classes अगर आपको देखनी है, then click on the first link. Master classes are free, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो and Super Coaching Telegram link is given to you. Fourth link is for the Super Coaching. अगर आपको complete preparation करनी है GATE की, then click on that link and here you will see that lot many courses are available. But ये जो courses हैं, please take a note of this point. These courses are the recorded sessions. Okay, but along with the recorded sessions, you will be getting a live series in which we will be having the quick revision और detailed session में सिर्फ और सिर्फ difference इतना होता है कि in the detailed sessions we are having good number of questions, practice questions भी session में ही होते हैं, but जब quick revision होते हैं उसमें भी discuss we will cover each and every concept with like one example. Okay, but second session will be on covering the previous year questions and it will be completely the doubt solving session. So with the super coaching आपकी preparation strategy क्या होनी चाहिए? Select the course जिसमें से आपको पढ़ना है. So if I go to the full courses provided by the Gate Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and by Testbook itself. So this is prepared by me and my team. Under this, we have 250 plus videos. You can follow all these videos. You can follow the recorded sessions. And after that, join the live series. In the live series, you can ask your doubts. You can directly interact with the faculty and you can participate in the discussions. Apart from that, you will be getting the study notes. अब इन study notes में complete concept will be covered in detail. हर एक चीज डिटेल में मिलेगी आपको notes. ये सारे subjects के लिए available है. For engineering, mathematics, general aptitude, formula notes, computer science and engineering. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सारे कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे लाइक प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड सो ऑन. फॉर ईच यूनिट फ्रॉम ईच कॉन्सेप्ट वी विल बी हैविंग अ डिटेल्ड नोट्स. आप देख रहे हो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास 10 यूनिट्स नहीं है बट स्टिल वी हैव 10 पीडीएफ बिकॉज हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग हमने एक अलग से पीडीएफ बनाई है ताकि आप उस डिटेल में पढ़ सको. After that, there are the formula notes for each subject. There is only one PDF. This is going to contain only the important set of formulas and important points that can be asked in true or false. That's it. So formula notes are, you can say that this is the subset of the detail notes. Detail notes में जो भी concept explain किया हुआ है, that is explained with the help of examples. तो examples भी आपके पास written format में आएंगी जबकि formula notes में कोई examples नहीं होते because by the time you are going through the formula notes, so we assume that you have already prepared for the content. Now you are revising your concepts, right? तो एग्जाम से पहले एक महीना पहले या 2 महीने पहले जब आप सिलेबस खत्म कर चुके हो, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला नोट्स की जरूरत होती है कि फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया. दैट्स इट. सो दीज फॉर्मुला नोट्स आर बेनिफिशियल ड्यूरिंग दैट टाइम. If you want to get all these benefits, you can go for the plans. So there are three plans available: 1 year, 2 year, and 3 year plan. So if you want to if you are in second year, you want to start your preparation from the second year or third year itself, then go for 2 year plan because for 24 months you'll be just paying 21,900 sorry 21,094 only, whereas for 1 year plan you'll be paying like 13,499. This is the discounted price that you will be getting after applying the coupon code. Coupon code is in the description here. It's SHEFALIS. So use this code to get the subscription to get the super coaching plan at a discounted price. Okay.
So this is all from my side. Benefits मैंने आपको बता दिए. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion here. Guys, anyone having any doubt? Tomorrow we will be having the session at the same time, that is 7 p.m. So we'll be having these sessions. यहाँ पे मैं time mention करना भूल गई हूँ. So it is 7 p.m. to 8 p.m. Rest it depends on the number of questions कि कितने questions है. But approximately हम 1 hour, 1.5 hour. This will be the duration. I hope this is clear to everyone. So today there will be no masterclass according to our schedule, which is on the screen. So now I'll see you tomorrow at the same time, that is at 7 p.m. with few more questions from 2020. तो ऑलमोस्ट हमारे 20 के क्वेश्चंस होने वाले हैं. डिजिटल के हो चुके हैं, डीबीएमएस के कंप्लीटली हो चुके हैं, एल्गोरिथम्स के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं. तो आई गेस अब जो मेजर क्वेश्चंस आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी क्वेश्चंस आज हो गए हैं. So most probably we'll be having more number of questions from computer organization and architecture. तो कल वाले सेशन में जो questions होंगे, that will be from computer organization and architecture, computer networks, theory of computation, and compiler design. I guess these are left out, and we have already covered. जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन नहीं किए, नहीं पता था, बच्चे आप लोग देख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर चुके हैं, एल्गो के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, एंड देन वी कवर्ड द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम डीबीएमएस, देन वी कवर्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. और ये जो अभी हम करंटली पेपर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिस इज 2020. 20 के बाद कोई पेपर हुआ ही नहीं. आफ्टर 3.5 years, this time it will be happening. And yeah, once we are done with 2020, next week we will start with the paper which was conducted before 2020. Okay, so thank you so much guys. God bless you. Take care. Good night. Bye bye.